चाइना की कैपिटल बीजिंग से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर नानशान के इस स्की रिजॉर्ट में सालाना हज़ारों लोग तरबियत हासिल करते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा भी लेते हैं। इस वक्त भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं जो कि बाकायदा तरबियत हासिल कर रहे हैं। एक ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे इस हवाले से बात करते हैं। Thank you very much for your time. I would like to ask you that how many people each year gets training here? Maybe hundred thousands, maybe even more. Even more. Yeah. And how long you are in this game? 10 years. I think more than 10 years. More than 10 years. Yeah. थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह की इस ट्रेनर से हमारी बात हो रही थी कि इस स्की रिजॉर्ट में सालाना 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो तरबियत हासिल करते हैं और तरबियत हासिल करने के बाद वो प्रोफेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और इस तरीके से वो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी बन जाते हैं। हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाएंगे कि ये जो ट्रैक है ये तकरीबन कोई 1000 मीटर इसका फासला है। यहाँ पर जब ये तरबियत हासिल करते हैं तो उसके बाद इनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है और इस स्की रिजॉर्ट पर वो बाकायदा फिर तरबियत हासिल करने के बाद प्रैक्टिस करते हैं और दीगर लोगों को भी सिखाते हैं। जी। Almost. So normally every day you should have over 2,000 people coming here. Over 2,000 people. Yeah, average. Good. The busiest day, nearly 10,000. 10,000. So very crowded. Very well. We need more space. This is the shop, you know, for the skis. This is the shop for rental. For renting, okay. Yeah, we got two rental center. Okay. Yeah, there is for ski. Here is for snowboarding. Snowboarding. Snowboarding is a bit difficult from skiing. It's different. 那你们聊吧，我会回答你。想明白。This sport is getting popular day by day in China. 还有个样没有了啊？截不知道。这个哪儿啊？ और आप इस वक्त देख सकते हैं कि स्कीइंग के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो है वो बाकायदा इन सीढ़ियों के ज़रिए यहाँ के टॉप तक पहुँचते हैं और इसके बाद यहाँ पर वो नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर उनको तरबियत भी फराहम की जाती है और वो तमाम लोग जो कि स्कीइंग सीखना चाहते हैं, रोज़ाना इंतज़ामिया के मुताबिक 2000 लोग आते हैं, उनको स्कीइंग की तरबियत जो है वो फराहम की जाती है और इस तरीके से वो मुस्तक़बिल में प्रोफेशनल खिलाड़ी भी बन जाते हैं। एक ट्रेनर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए मज़ीद इस हवाले से उनसे जानने की कोशिश करते हैं। Thank you very much for your time. My question from you is that so many people are coming here, so what kind of training you are giving to these beginners? So as long as they get inside of our ski resort, as long as they have like all of their equipments down, they can go over to ski school, and we have our professional ski instructors come over to offer the ski lessons to them. And after 2 hours or even like 3 hours, 4 hours trainings, they can do basic pizza sliding down to the bottom, and like the basic parallel turns and the snowplow. So training is only ski training or snowboarding as well? And we have the snowboarding as well. Yes, like the snowboarding, like the back edge, like the side edge sliding down to the bottom. So they can do the basic training, and they can do the stopping and braking as well.
थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह के आप देख भी सकते हैं कि हम अगर इस यहाँ पर नज़र दौड़ाए तो हर उम्र के अफराद यहाँ पर मौजूद है। बच्चे, जवान, ख़वातीन, बूढ़े, बुज़ुर्ग, हर किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं और हर उम्र के लोग जो है वो बाकायदा यहाँ पर स्कीइंग सीख भी सकते हैं और उसके बाद ये लोग जो है ये प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाते हैं और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा भी लेते हैं। जी।